Good evening, everyone. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Thank you. So, good evening, everyone. I'm Swikriti Jadon, Center Head, Jamshedpur Management Association, and my team delightedly welcome you all for today's session of Wake Talk, that is on Decoding Budget 2024, key highlights and its implications, with our expert speaker, Mr. Rishi Arora. Mr. Rishi Arora is a transformative trainer with over 9 years of experience, having trained numerous aspiring professionals in various technical subjects. He is a chartered accountant with a notable achievement of securing the 28th All India rank in the CA CPT examination. Mr. Rishi Arora is certified as an independent director by Indian Institute of Corporate Affairs and holds several specialized certifications from the Institute of Chartered Accountants of India in goods and service tax, concurrent audit, public finance and government accounting, and forensic accounting and fraud detection. Mr. Arora is currently a partner at K. Raghavan Associations, where he drives financial strategy and innovations, leads audit engagements, enhances compliance frameworks, and provides strategic advisory services. He has previously worked at Tata Cummins Private Limited and Indian Steel and Wire Products Limited at senior positions. Mr. Arora is known for his excellent communication, adaptability, and interpersonal skills, making complex concepts easy to understand and engaging for diverse audiences. He is committed to creating impactful solutions and achieving extraordinary results through collaboration and innovation. Now, I welcome our distinguished speaker, Mr. Rishi Arora, to share his insights into the Budget 2024 and its impact on businesses and individuals. Sir, I request you to please take the floor and lead the session from here. Thank you so much. Thank you so much for inviting me today to deliberate on the very important topic. I would say because this is the first budget of the third term Modi 3.2. I mean the Modi government or the BJP NDA government. There have been a lot of changes which will directly indirectly affect us as a uh, citizen of this country or being the if anyone is from the middle class, upper middle class, it will be affecting them a lot because taxations have been changed in the when it comes to the investment in the shares or properties, or for that matter, gold. By the way, I'm completely audible, right? Any problem in Sir, there? you're audible. Great. Thank you so much. So before I think I should share my screen. Sorry. Can you see the screen? Yes, sir. This is Yes, visible. sir. Yeah, thank you so much. As introduced, this is the we will try to decode the budget 2024. Before we start, a simple declaration. This presentation has been simplified overview of the union budget, and any author, I mean me or my team, won't be responsible for the errors or losses. If you put reliance on this information, we can, I would suggest you to consult your financial advisor before you take any kind of decision based on this information. To start with, we all know what was the theme of the budget. It was around the Viksit Bharat, that is developed India, and was the focus was on the inclusive growth, infrastructure development, green energy transition, technological advancement, and where forecasts were on focus, Mahila, women, Garib, poor, Yuva, youth, and Annadata, that is farmers. These are a few of the macroeconomic views. Of course, the total expenditures in terms of capital or revenue uh, has been increased in the budget, and so is the target for the receipts. So, whatever changes have been made in the direct or the indirect tax laws. So, direct is something, direct is income tax. So,
where we pay taxes on our incomes. It's the direct tax, and whenever we pay any taxes on the things we consume, like food or even any services, we need to pay GST on that. So that's the indirect tax. And this year, the estimation has been increased by 15% when it comes to the tax collection from the direct income or the taxes on income. So whatever discussion we will have in the future slides, in the coming slides, we'll understand how this 15% percent figure will be achieved by the NDA government. To start with, personal income tax, which is so personal to us, we have been there have been a lot of confusions around old regime and new regime. People, they were, this year when we filed returns for our clients, we got a lot of questions around it. There are few who used to get a lot of refunds in the past because of the old regime. They used to claim deductions under ATC, ATD, Mediclaim, life insurances, pensions, and some on the housing loans and everything. They used to get a lot of deductions in there in the old regime. And this year, when they have opted for the new regime, by choice or because of the employer's policy, they have seen not a lot of tax deduction, but had the expectation of refund this time. So yeah, all in all, new regime is better than the older one when it comes to when you don't invest a lot of money in the opportunities like pension funds or if you don't take Mediclaim insurances or life insurances, or you're not uh, diverting your money towards buying a home and taking a housing loan. So new regime would have proven a better option for you. And so in the future, with the change in the personal income slab, which have been changed, like initially the income slab was from 5% for 3 to 6 lakhs, which has been increased to 3 to 7 lakhs. And then 10% was used to be charged for an income between 6 to 9 lakhs, which has been changed now to 7 to 10 lakhs. And then 10 to 12 would be under 15%, 12 to 15 would be under 20%, and then above 15 lakhs, 30% will be charged. So this is the change in the income tax slabs. Cess remains the same as 4% over and above the tax amount. Now, when it comes to the rebate amount is 25,000. That comes under 87A. And as we all know, only three deductions are allowed under the new regime: the standard deduction of 75,000, family pension deduction, 25,000 or one third, whichever is lower. And then there is another Agniveer Corpus Fund deposit. You can claim the deduction of that under the new regime. Older, no tax up to 5 lakhs. Again, progressive kind of tax rates from 5 to 30%, depending on the bracket that you are into. And of course, there are many deductions and exemptions that are available to you, provided you make them. Yeah. I mean, there are many who don't make those kind of investments or spendings, but do claim them in the returns, and they sooner or later will be getting notices from the income tax department. So, if you are among that lot, I would really urge you not to claim those kind of deductions, and only claim if you have valid proof of document. Uh, Older regime, no changes because uh, you know, site is to get rid of the old regime and introduce new regime in the longer term. Surcharge rates remains the same for the income up to 50 lakhs. There is no surcharge. 50 to 1, 10%, 1 to 2, 15, 2 to 5 crores, 25%, and above 5 crores, it is 37%.
that was about the income tax. So I would request everyone to note their questions in any of these slides if they have any questions related to their portfolio or their um, the if they if any of these provisions impact them, you may park the question. We can address them at the end of the session. Then comes the corporate tax. So there's no change for the domestic companies. Uh, there is a tax reduction for the foreign companies from 40% to 35%. There's an abolishment of angel tax. We'll discuss this in the coming slides. And then the buyback of shares. The buyback tax have been shifted to the shareholders as team dividends. Another hit on the on the middle class or the upper middle class if you buy back the shares and things like that. So in indirect taxation, there have been equalization levy on the e-commerce withdrawn, and then there have been some custom duty changes for various goods. One of which is gold. Uh, I mean, I've not included any slides on gold in this session, but I would like to address that for a couple of minutes. If you are among the one who have been hearing like SGBs, like sovereign gold bonds, are better than the physical gold. You know, a very clever move have been made by the government. Like the gold, as we all know, gold rates have been increasing since last 6 months and 1 year, right? Now they have reduced the custom duty by 9%. Now you will be like, it's a good thing, right? Yes, it's a good thing if you are into buying physical golds or planning to buy physical golds. But if you are among people like me who have invested their hard-earned money in sovereign gold bonds, you know, we have been duped. I'm using harsh words, sorry, but that's what has been done. uh, our investments were rising since last 6 months, 1 year, because of the overall increase in the price of gold worldwide. Now, because of the introduction of, because of the 9% reduction in the custom duty, the gold price has changed, and that will affect the prices, the maturity value of the sovereign gold bonds. So again, a very clever move. So if you are planning to invest in gold, gold bricks could be the better option than the sovereign gold bonds. If we believe that this would be the kind of actions that government will be taking in the future as well. Now coming to the corporate tax rates for the manufacturing company, the proposed rate of income tax is 15%. Companies opting for 15 DBA, 22%. Domestic company, 30%. Domestic company whose total income is in between 1 crore to 10 crores, it is 30% plus 7% surcharge. For domestic company whose turnover is greater than 10 crores, 30% plus 12% surcharge. And then other companies whose total income is less than 1 crore, 35%, and so on and so forth. Yes, this is something again which will be affecting a lot of us. Capital gains tax. Holding period for various assets have been changed. So if you are among people who invest money in the share market through mutual funds or to any of the securities, this will be affecting you. LTCG rates have been revised. Benefits of indexation have been discontinued. We will discuss this in detail. Exemption of long-term capital gain up to 1 lakh have been increased to 1.25 lakhs. But again, that wouldn't affect much. Only if you'll be making a profit in LTCG over and above 1.25 lakhs, this can affect you, and that too with 25. And then again, tax rate has to be taken into consideration. Security transaction tax rates have been revised. So if you are one
who is into the FNO trading, futures and options trading, or intraday trading, this will affect you. Coming to the LTCG rate change, LTCG is something where if you buy a capital asset like land, building, jewelry, and sell them after a specified period of time, which will be discussed, the gain will be considered as the long-term capital gain. And for that, the rates have been prescribed, which have been reduced and increased in some cases. So if we talk about the STT paid listed equity shares, units of equity oriented funds or business trust, so the rate has been increased from 10 to 12.5%. Other capital assets like land, building, jewelry, the rates have been reduced from 20 to 12.5%. However, the provision of indexation, which is the ruler of, or you may say, which takes into consideration the inflation rate, has been removed. And for the other specified assets, it has also been increased from 10 to 12.5%. So I can continue in English, right? Or do you want me to include Hindi as well? Anyone? Yeah. Does Thank you. anyone have issue with the English? Do they want it to be in Hindi? I can do in Hindi. I don't mind. I'm sorry, I should have asked this before. It's okay, sir. Whichever you are comfortable. I think Aisha ma'am is saying, okay, you can continue with Hindi so that it's easily understandable. हिंदी ओके आई डू दैट ठीक है तो अभी तक जितने भी हम लोगों ने डिस्कशन किया ऑल इन ऑल एक मैं 2 मिनट और ले लेता हूँ फटाफट बिकॉज काफी कुछ इम्पैक्ट कर रहा है अपने को टैक्स रेट्स चेंज हुए हैं स्लैब यू कैन आप गूगल करके इसको चेक कर सकते हैं स्लैब थोड़ा बेनिफिट मिलेगा हम लोगों को 17,000 टू बी प्रिसाइज 17,500 का बेनिफिट है अगर आपका इनकम समवेयर अराउंड 10 टू 12 लाख के आसपास है तो 17,500 का बेनिफिट तो फ्लैट मिल रहा है अपने को एंड देन ऑफ कोर्स जो भी रिबेट्स वगैरह हैं जो जैसे थे वैसे ही हैं ओल्ड रिजीम में कोई भी चेंजेस नहीं है वही है बिकॉज गवर्नमेंट का जो लॉन्ग टर्म विजन है वो इसे रिमूव करने का है कॉर्पोरेट टैक्सेस में चेंजेस हैं कैपिटल गेन टैक्सेस बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है आई मीन डिस्करेज करेगा बहुत लोगों को इन दी शॉर्टर टर्म आई मीन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं आज खरीदा कुछ कल बेच दिया या एक महीने बाद बेच दिया तो देखने में तो लग रहा है कि ठीक है 2.5% का ही इंक्रीमेंट है फ्रॉम 10% 12.5% लग रहा है या जो भी है बट कहीं ना कहीं वो सॉरी 15% टू 20% 5% का ही इंक्रीमेंट है बट वो 5% आपका अप्रोक्सीमेटली 25% इम्पैक्ट दे रहा है प्रॉफिट मार्जिन में सो काफी ज्यादा इम्पैक्ट एंड देन यस एलटीसीजी जो रेट चेंज हुआ है स्पेशली लैंड का बिल्डिंग का फ्रॉम 20 टू 12.5% लोगों को दिख रहा होगा कि ये 7.5% नीचे आ रहा है बट इन्फ्लेशन रेट जो रहा है एक तो होता है सीपीआई इंडेक्स जो कि एक मापदंड है या आपको बोल सकते हैं गॉज करता है कि इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ रहा है इंडिया में तो वो भले ही गवर्नमेंट शो कर रही है 5% के आसपास बट अगर आप सेगमेंटल इन्फ्लेशन की बात करेंगे सेगमेंटल इन्फ्लेशन क्या होता है कि अगर आप किसी शहर में रह रहे हो जैसे जमशेदपुर है या कोई टीयर 1 सिटी में रह रहे हो दिल्ली बैंगलोर तो आपका जो वहां पे इन्फ्लेशन रहेगा वो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा रहेगा एज कंपेयर्ड अगर आप एक विलेज में रह रहे हैं तो अब शहर में रहने का इन्फ्लेशन ज्यादा क्यों होगा बिकॉज हो सकता है आपको रेंट देना पड़ रहा है अगर आपका खुद का घर नहीं है तो जो चीजें आप खरीदते हो उनके रेट्स ज्यादा होंगे गाँव में चीजें सस्ती मिलती हैं या खुद की खेती बाड़ी होती है तो खाने का फूड का जो मेन है खर्चा वो भी कम है तो जो अगर आप सेगमेंटल इन्फ्लेशन की बात करेंगे जो शहर में है या सिटीज में है वो अप्रोक्सीमेटली 9 to 10% है तो गवर्नमेंट सिंपली इंडेक्सेशन हटा के ये बोलना चाह रही है कि आपने
इन्फ्लेशन, हम लोग कैपिटल एसेट्स नहीं, लैंड बिल्डिंग अगर आपने कुछ खरीदा है पास्ट में, तो अगर वो 30 लाख का खरीदा था और आप आज बेचने जाते हो, तो मैं उसको 30 लाख का ही मानूंगा उसका कॉस्ट। हम उसे इन्फ्लेशन को उसमें एडजस्ट नहीं करने देंगे, इंडेक्सेशन नहीं करने देंगे। और आपका कैपिटल गेन जो होगा, जो आपका उस पे लेमैन लैंग्वेज में बात करें, कोई सामान खरीद के अगर बेचते हो तो जिसमें प्रॉफिट होगा वो ज्यादा होगा, वो गेन हम लोग ज्यादा कंसिडर करेंगे। हाँ, हम लोग एक काम जरूर कर रहे हैं कि हम लोग रेट घटा दे रहे हैं फ्रॉम 20 to 12.5%। बट मैंने जितनी कैलकुलेशंस की हैं, देयर आर फ्यू केसेस जहां पे ये इंडेक्सेशन हटाने से इम्पैक्ट पॉजिटिव आ रहा है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये इम्पैक्ट बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सिमिलरली जो गोल्ड का था, तो हम लोगों ने जैसे पास में अभी गोल्ड डिस्कस किया तो एक स्लाइड पहले, तो गोल्ड बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करना थोड़ा अब एक गलत डिसीजन साबित हो सकता है, अगर गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है वो हमेशा कस्टम रेट्स के थ्रू या अदर जीएसटी रेट्स के थ्रू गोल्ड के प्राइसेस कम करने का रहेगा, तो विच आई रियली डाउट, बिकॉज 6% से थोड़ा और नीचे करना मुश्किल रहेगा उनके लिए, बट दे कैन ऑलवेज डू दिस, राइट? तो अगेन डिसीजंस लेना उतना आसान नहीं रहेगा जितना थोड़ा पास्ट में था। होल्डिंग पीरियड चेंज हुआ है इन सम केसेस, लाइक लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं है होल्डिंग पीरियड पे। अब होल्डिंग पीरियड इंपॉर्टेंट क्यों है? होल्डिंग पीरियड ये डिसाइड करता है कि वो लॉन्ग टर्म रहेगा कि शॉर्ट टर्म रहेगा। तो अगर इक्विटी शेयर्स आपने परचेज किया और 12 महीने बाद अगर आप बेच रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएगा, 12 महीने से पहले बेचते हो तो शॉर्ट टर्म। तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज है अदर देन द इक्विटी शेयर्स, तो वो जो पहले 36 मंथ्स था, दैट इज जैसे डेट फंड, उसमें 36 मंथ्स था, तो अब वो अब हो गया है 12 मंथ्स। इमूवेबल प्रॉपर्टीज और में भी कोई चेंजेस नहीं है, कुछ अदर एसेट्स में फ्रॉम 36 मंथ्स टू 24 मंथ्स कर दिया गया है। सो अगेन ये भी इम्पैक्ट करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो डिपेंड करता है कितनी पीरियड की होल्डिंग है और क्या गेन हो रहा है, ठीक है। देन कम्स दी एसेट वाइज पीरियड होल्डिंग, ये थोड़ा डिटेल्ड है। इक्विटी शेयर्स 12 मंथ्स, कोई चेंज नहीं है। जहां चेंज है मैं से वो डिस्कस कर लेता हूँ। यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट 36 मंथ से उसे 12 मंथ्स कर दिया गया है। अदर यूनिट्स में भी 12 मंथ्स। प्रेफरेंशियल शेयर्स में कोई चेंजेस नहीं है। डिपेंचर्स में भी अनलिस्टेड का बढ़ा दिया गया है पीरियड। और ऑल इन ऑल बाकी सेम ही है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी सेम है, अदर एसेट्स को 36 to 24 मंथ्स। सो बेसिकली जो पहले 36 मंथ्स हुआ करते थे, या तो 12 मंथ्स है या 24 मंथ्स है। पार्टनरशिप फर्म्स, अगर आप बिजनेस में हैं और आपकी पार्टनरशिप फर्म है, तो आपके लिए भी कुछ चेंजेस हैं इस बजट में। रिवैम्प किया गया है। टैक्स रेट्स तो अनचेंज्ड हैं। हाउएवर रिम्यूनरेशन जो पहले अलाउड था 1.5 lakhs, उसे डबल कर दिया गया है 3 lakhs पे। बट एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी होगी पार्टनरशिप फर्म रिलेटेड, पहले टीडीएस नहीं लगते थे। अभी जितना भी आप पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे, इवन थ्रू द कैपिटल अकाउंट, दैट would come under the purview of TDS. We will discuss that. Then the abolition of angel tax. अब angel tax क्या है? It is the tax on the premium for investments in startups. Suppose आपका कोई स्टार्टअप है, तो अगर आप और आपके स्टार्टअप में कोई एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, तो पहले ये एक एंजल टैक्स लगा करता था अप्रोक्सीमेटली 31% ऑन एक्सेस ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू। हाउएवर ये पहले भी एग्जेम्प्ट हो सकता था ऑन ऑन टेकिंग द रजिस्ट्रेशन अंडर डीपीआईआईटी। ये एक स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, फिर एक सर्टिफिकेशन होता था, देन सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ अप्रूवल्स लेने पड़ते थे, तो उसके बेसिस पे एंजल टैक्स का एग्जेम्पशन मिल जाता था। बट दिस इज अ गुड न्यूज दैट एंजल टैक्स का एबॉलिश ही कर दिया गया है। नाउ देयर इज नो requirement to take the angel tax exemption. So this will of course boost the startup growth and innovation. So if you're among the one who is looking, who is into startup, this will impact you.
TDS कोई रेट चेंज नहीं है फॉर सैलरी, फॉर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, लॉटरीज, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स और पेमेंट्स टू नॉन रेसिडेंट्स, सारे सेम है। चेंजेस जो हुए हैं वो है पार्टनरशिप फॉर्म में, सेक्शन 194T, कोई भी पेमेंट टू पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, remuneration, commission, bonus, interest would be subject to 10% TDS, even if the transfer has been made to the capital account. So there is a threshold limit. The total payment should exceed rupees 20,000, which in most of the cases does. कुछ TDS rate जो change हुए हैं, ये list है. I'll share the PDF copies later after this session, which can be shared with you guys as well. So you can refer to these rates. Then coming to the TDS, TCS credit for the salaried employees. जैसे आप पहले कुछ अगर आपने कार खरीदा तो कार पे TCS लगता था, तो उसका आप क्रेडिट ले सकते थे, बट मोस्टली आप रिफंड के टाइम पे लेते थे। तो डिडक्शंस आपको क्लेम नॉर्मली नहीं होता था पहले इन फ्रॉम योर सैलरीड और फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, थ्रू योर एम्प्लॉयर। तो अभी सॉल्यूशन एक लाया गया है, 194(2)B को अमेंड किया गया है टू अलाउ फॉर एनी टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड, and that can be considered. And this will be effective from the 1st October 2024. TDS on sale of immovable properties, if there are multiple property holders, like property दो तीन लोगों के नाम पर है। पहले था कि कंसिडरेशन अगर एक इंडिविजुअल का 50 लाख के ऊपर होगा तो TDS काटना है, बट अभी जो प्रोविजन में चेंजेस लाया गया है, द कंसिडरेशन इन टोटल exceeds that limit, even then, even if the individual limit is less than 50 lakhs, वो TDS को आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो TDS on sale of immovable property has been changed. लग्जरी गुड्स में TCS इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले सिर्फ मोटर व्हीकल पे था फॉर द वैल्यू ग्रेटर देन 10 lakhs, बट अभी एनी लग्जरी गुड्स जिनकी वैल्यू 10 लाख से ऊपर है उस पे 1% TCS है। देन फॉर फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोजर्स इन ITR, पहले अगर डिस्क्लोज नहीं करते थे तो प्रोविजंस थोड़े से लीनियंट थे, अभी प्रोविजंस को और स्ट्रिंजेंट किया गया है। सो पेनल्टी जो इसमें है वो है 10 lakhs अंडर द ब्लैक मनी एक्ट। एग्जेम्पशन मिल सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ द अमाउंट कोर्स। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द चेंज। इफ यू आर रिलेटेड विद द चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट, तो 1023C का एक एग्जेम्पशन था। लाइक अगर आप 1023C आता है इस पे आप एजुकेशनल सोसाइटीज वगैरह पे ज्यादा एप्लीकेबल आता है, मतलब ये सेक्शन, तो उसको मर्ज कर दिया गया है सेक्शन 11 एंड 13 से। एंड देन कुछ टाइमलाइन में भी इंक्रीमेंट है फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड ऑल। This is one which can affect a lot of us. Buyback of shares. Again, if companies buy back, that would be considered as the dividend and dividend income for the shareholders. And buyback amount जो होगा उस पे टैक्स देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा एक टैक्स बर्डन को शिफ्ट किया गया है ऑन द शेयर होल्डर्स। रेंटल इनकम हम लोग बहुत लोग रिपोर्ट करते थे एज द बिजनेस इनकम इन द इनकम टैक्स रिटर्न। तो अभी क्लैरिफिकेशन क्लियरली आ गया है कि अगर आप कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, एंड दिस वुड lead to the misreporting and defective return. So it has been uh, you know suggested by the government that you should report that under the income from the house property only, and not the profit and gains from the business of professions, because बहुत लोगों को ना expenses allowed हो जाता था। So that is something benefit मिलता था अगेन टैक्स पेयर्स को इनडायरेक्टली, क्योंकि क्लैरिटी कुछ थी नहीं एक्ट में, ये एक लूप होल था, तो उसका फायदा उठाते थे लोग, बट वो भी लूप होल अभी क्लोज हो गया है। सो this was it. I think we can take a lot of questions today, So and there we is a can go back to question the from slides Mr. we would like to Sikor. discuss. Mhm. Yeah, they want to ask, sir, can you please explain definition of angel tax?
हाँ, एंजल टैक्स एज आई सेड, जो प्रीमियम होता है ना फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर, लाइक सपोज आई हैव अ स्टार्टअप, और मेरे स्टार्टअप में मुझे इन्वेस्टर्स चाहिए। ठीक है, तो मैं एक इन्वेस्टर्स को ढूंढता हूँ। जो जो पहले इन्वेस्टर्स होंगे ना, वो मेरे मेरे लिए एक एंजल इन्वेस्टर्स हो जाएंगे। पहले इन्वेस्टर्स बोले, या फंडिंग्स के टर्म में अलग अलग फंडिंग टर्म्स यूज होते हैं, बट अगर सिंपल लेमैन लैंग्वेज में इसको समझे, तो अगर कोई मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो दैट वुड बी टर्म्ड एज द इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स। और उसके जो इन्फ्लेशन मिलती थी, उसको जो वैल्यू इंक्रीमेंट मिलती थी इन देयर रिटर्न, सपोज मेरे आज की कम जब कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कंपनी की वैल्यूएशन निकल के आ रही है, लेट्स से 1 करोड़, बट जब वो एग्जिट ले रहे हैं, उसकी उनकी वैल्यूएशन निकल के आती है 1.5 करोड़, और वो फेयर मार्केट वैल्यू से सपोज 30-40 लाख ऊपर ही है अभी भी, तो 40 लाख पे टैक्स लगता था 31% के आसपास इन्वेस्टर को। तो वो एक इन्वेस्टर के लिए एक गलत डील साबित होता था, या नेगेटिव डील साबित होता था व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन दी स्टार्टअप्स। सो पहले एक डीपीआईआईटी रजिस्ट्रेशन लेकर, थोड़े बहुत अलग से सर्टिफिकेशन या परमिशंस लेकर वो टैक्स को एग्जेम्प्ट करा दिया जाता था अंडर स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन। अभी उसकी भी जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ये बोलती है कि उसको एबॉलिश कर रहे हैं, कोई टैक्स नहीं लगेगा, एंड जिनको भी इन्वेस्ट करना है स्टार्टअप्स में, आप प्लीज इन्वेस्ट कीजिए, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। एनी अदर क्वेश्चन? Yeah, so there is one question from Kumar Shashikant. He's asking, in your opinion, which income tax regime is better, old or new? गुड। सो दिस इज द वेरी आई मीन द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो हम लोगों को मिलता है एज अ प्रोफेशनल। एंड मेरे ओपिनियन में, अगर आपका इनकम 10 लाख के ऊपर है और आपने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रखा, 10 लाख के फॉर दैट मैटर 7-8 लाख के भी ऊपर ऊपर है, और आपने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंसेज और मेडिकल इंश्योरेंसेज और लोन्स, बेसिकली अगर आपको 80 से 80 के अंदर आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके, तो न्यू रिजीम आपके लिए बेटर है अगर आप कैलकुलेशन करोगे। हाउ एवर, आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन टू कंपेयर द टैक्सेस, टैक्स पेबल particularly before filing the return under both the regime। तो हम लोग जितने भी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हम लोग ओल्ड रिजीम में भी कैलकुलेशन करते हैं क्लाइंट का, न्यू में भी करते हैं, दोनों का कंपैरिजन करते हैं, जिसमें क्लाइंट को बेनिफिट हो रहा है वो फाइल कर देते हैं। सो वो डिपेंड करेगा केस टू केस बेसिस पे। So one more question is there from Mr. Manish Kumar. He's saying, hello, sir. It was great presentation. I would like to ask about last slide for rental income. श्योर, थैंक यू सो मच। या सो रेंटल इनकम, अभी आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपको वहां से रेंट आ रहा है, हो सकता है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, हो सकता है वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो आप जो भी उसका इनकम आता है, आप उसे, कई लोग रिपोर्ट करते थे अंडर इनकम फ्रॉम दी हाउस प्रॉपर्टी ब्रैकेट। मतलब 5 हेड्स होते हैं, राइट? फर्स्ट हेड इज इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकेंड हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड बिजनेस प्रोफेशन, अदर सोर्सेज एंड कैपिटल गेन्स। ठीक है, ये पांच पांच सोर्सेस हो गए। तो कई लोग क्या करते थे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ना रिपोर्ट करके उसे प्रॉफिट्स फ्रॉम एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन में रिपोर्ट करते थे, क्योंकि वहां पे वो खर्चे क्लेम कर सकते थे, लाइक दे कुड हैव प्रिपेयर्ड शोन एज रेवेन्यू एंड देन एक्सपेंसेस, जो कि प्रॉफिट मार्जिन उसको 10% के आसपास ला के रख दिया। तो सपोज अगर आपको साल भर में रेंट मिला है 10 लाख, आपने प्रॉफिट दिखा दिया उसमें 1 लाख, और 1 लाख पे टैक्स दे दिया। ठीक है, तो वो बेनिफिट होता था कई असेसीज को या कई टैक्स पेयर्स को। और हाउस प्रॉपर्टी में अगर अगर आप दिखाते हो सपोज 10 लाख, तो उसका 30% ही आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, और आपने अगर कुछ म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह पे किया है तो उसका। तो हाउएवर वो प्रॉफिट जो उसमें जो गेन दिखता था ऑन हाउस प्रॉपर्टी, वो अप्रोक्सीमेटली 50% दिखता था, अगर हमारे एग्जाम्पल में भी देखेंगे आप तो वो टैक्स बचाने के लिए कई लोग प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर उसे शो किया करते थे। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आया है और स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है कि दिस वुड
be termed as misreporting and defective return if we'll do so. So ये हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा. So there is one more question from Mr. G. Hariharan. He's asking, can you tell me what was the reason for the removal of indexation? Even I had some question on indexation and the property. Sure. I mean, I'm still wondering what could be the reason for the removal of indexation. Because जब मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, मैं आऊंगा इस पे. जैसे ही जब कस्टम ड्यूटी घटाया गया ना फ्रॉम 15% to 6%, right? So earlier the custom duty on gold was 15% and it has now been reduced to 6%. 9% का रिडक्शन हुआ है उसमें. तो इनिशियली तो वो सुन के जब बजट सुन रहा था बहुत खुशी हुई, ठीक है, कि हाँ यार गोल्ड सस्ता हो गया, अब तो गोल्ड खरीदेंगे, अभी निकालते हैं पैसे, दुकान जाते हैं, खरीद के लाते हैं. बट थोड़ी देर बाद समझ में आया कि भाई जो हमने इतने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में, उनके प्राइस भी कम हो गए अचानक से. जहां मुझे वहां पे अप्रोक्सीमेटली लेट्स से अगर आपने लाख रुपए डाल रखे हैं, ठीक है, तो वो प्राइस अचानक से आपका 6-7% का हिट ले रहा है कम से कम. तो आपकी जो वो इन्वेस्टमेंट थी वो 7% उसकी वैल्यू डिफ्लेट हो गई, वो वैल्यू कम हो गई. तो सिमिलरली इंडेक्सेशन में क्या हो रहा है कि इंडेक्सेशन में जब आप इंडेक्सेशन हटाया जा रहा है तो बेनिफिट जो हो रहा है वो कई बड़े अगर प्रॉपर्टीज हैं या जहाँ पे प्रॉपर्टीज की वैल्यू मोर देन 11% अप्रोक्सीमेटली बढ़ी है, that would be, if I'll say that in a clear technical language, it would be 11% CAGR. Okay, so if the property rate has increased at the rate of 11% CAGR, तब तो आपको जो न्यू प्रोविजन है that is 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन वो आपको बेनिफिट होगा. बट अगर उससे कम रेट में बढ़ा है प्रॉपर्टी का वैल्यू, तब नुकसान है. आई मीन इन फ्यू कैलकुलेशंस वी हैव सीन दैट the tax has increased over and above 1000%. Like पहले अगर उनको इंडेक्सेशन के बेनिफिट के साथ 10 लाख रुपए देने पड़ मतलब 1 लाख रुपए देने पड़ रहे थे टैक्स, या गेन 1 लाख रुपए हो रहा था, वही उनका 1000% से बढ़ गया है वो इम्पैक्ट. Again, I'm reiterating the this thing that कई केसेस में इनका बेनिफिट मिलेगा सिटीज को, बट वो बड़े सिटीज टियर 1 सिटीज लाइक मुंबई जहाँ पे रेट मतलब सालों साल बहुत तेजी से बढ़ते आ रहे हैं, तो वहां पे उनको हो सकता है बेनिफिट मिल जाए. बिकॉज जो 11% CAGR होगा तभी वो 9% इन्फ्लेशन या सेगमेंटल इन्फ्लेशन या सीपीआई का जो इन्फ्लेशन है जो कि ऑन एन एवरेज 5 to 7% के बीच में रहा है हमेशा, उसको डिफीट कर पाएगा एंड वो आपको बेनिफिट मिल पाएगा. क्योंकि इंडेक्सेशन क्या देखता है, इंडेक्सेशन सिंपली कंसिडर करता है इन्फ्लेशन रेट. अगर हम लोग इन्फ्लेशन रेट को हटा दे रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी के रेट उतने तेजी से बढ़े कि नहीं बढ़े हैं, सीएजीआर हुआ है कि नहीं, तो वो इम्पैक्ट आपको नेगेटिव ही दिखेगा हमेशा. So, sir, if suppose I'm buying a property of 50 lakh and after 15 years its value is in crores, so it is obviously more than 11%. So that from कितना 2024 करोड़ budget, होगा? I am in profit ओके, ओके. because it's more than नहीं, 11%. कितना Is it that? प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा? हम लोग अभी कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर आप बोलोगे तो. Yeah, from मतलब वो 50 डिपेंड lakh, करता है suppose आप. it went to 2 हाँ, crore. ओके. मतलब कहाँ पे है प्रॉपर्टी? कहीं पे In a भी ठीक है. two-tier city. हाँ, ठीक है, चलेगा. तो आपने प्रॉपर्टी कब खरीदी है? around 15 years back. ओके. हम्म. और आप बोल रहे हो कि सीएजीआर उसका निकालेंगे तो वो 11% से बढ़ेगा, ऊपर होगा. That's what I'm asking you, कि whether it's this budget is profitable for me or is going to give me a loss as compared to नहीं, वही previous मैंने budget, राइट राइट previous tax राइट राइट regime. राइट. तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, अब मैं मुझे वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 50 लाख 1.5 करोड़
और अगर मैं 11% सीएजीआर लग लग के वो 1.5 लाख 1.5 करोड़ से नीचे हो रहा है कि ऊपर हो रहा है, तो आई हैव टू डू दैट काइंड ऑफ कैलकुलेशन देयर। तो सिंपल, अगर आप एक एक कैलकुलेटर, बहुत सारे कैलकुलेटर्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, अगर आप चेक करना चाहो तो सिंपल से एक चीज ध्यान रखनी है। टू बी राउंड ऑफ में अगर उसको कर लो तो 10% भी आप बोल सकते हो, 10%, 11% सीएजीआर के अगर आपका ऊपर वैल्यू बढ़ा है, सीएजीआर क्या कंपाउंडिंग इफेक्ट लेते हुए प्रॉपर्टी की रेट बढ़ी है अगर, देन of course it's a beneficial thing for us if we sell our asset after 15 years from now, right? And then if that's not the case, indexation would have been better. Okay. Thank you, sir. There is one more question from from Mr. Nishit Srivastava. He is asking, if we take loan to purchase the house, so due to high interest rate, cost of house become more than actual cost. At that time, if we sell the house, then it will be loss due to removal of indexation. Is that true? Yes, it is. Unfortunately, it is. Yes. See, these are the things like interest cost. See, government believes one thing, कि हम लोग जो मिडिल क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, वो जो घर खरीदते हैं वो खरीदते हैं एक या दो मैक्सिमम, राइट? क्योंकि उतना ही रहता है, हम लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए घर को नहीं खरीदते या बेचते हैं। तो उसके लिए, उस बेनिफिट को लेने के लिए आपके पास सेक्शन 54 है, ठीक है? तो जरूरी नहीं है आपको वो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा ही लगेगा। तो सेक्शन 54 को एबॉलिश नहीं किया गया है। तो सेक्शन 54 क्या कहता है? सेक्शन 54 अलग अलग है, बट सिंपल अगर मैं आपको बोलूं हाउस प्रॉपर्टी के केस में, तो जैसे अगर आपका भी एक एग्जांपल जो था 15 साल बाद वाला, तो जितने भी अगर आपको 1.5 करोड़ मिले, अगर आपने 1.5 करोड़ के 1.5 करोड़ या उससे थोड़ा ऊपर अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो किसी और हाउस प्रॉपर्टी में, तो गवर्नमेंट बोलती है हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है? तो ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट वाला जो एक एंगल है कि हाँ इंटरेस्ट कॉस्ट देना पड़ रहा है, तो हाउस का कॉस्ट ऑफ कोर्स ऊपर लगा उनको, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द प्राइस विल आल्सो इंक्रीज। सपोज मेरे, अगर मैं ही उस केस में हूँ और मैं वो घर बेच रहा हूँ, तो मैं, मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि मैं सिमिलरली किसी एसेट में इन्वेस्ट करूँ, तब मुझे टैक्स नहीं लगेगा। बट इफ आई एम अमंग द पीपल हु बाय एंड सेल दी एसेट, या मैं घर बेचकर उस पैसे को कहीं और यूज करना चाह रहा हूँ, तो मेरे लिए दिक्कत है, तब मुझे टैक्स ज्यादा देने पड़ सकते हैं, जरूरी नहीं देने पड़ेंगे। Okay. Ms. Sri Pujita has a question that what are the common misconceptions people have about budgeting at the national level? Sorry, I didn't get that question. Can you repeat that, please? What are the common misconceptions people have about Okay. budget at the national level? Misconception about the budget at the international level. National level. National level. National level. About the budget, budget 2024, you're saying, right? Hmm. Yeah. So these are the misconception, like one of which we are discussing right now. So it could be construed as a misconception as well कि हो सकता है आपका indexation हटने से टैक्स ज्यादा लगे, बट दिस कुड बी अदर वे अराउंड एज वेल, ठीक है? एक और मेरा मिसकंसेप्शन हो सकता है अबाउट द गोल्ड, कि जैसे अभी प्राइस को रिड्यूस कर दिया गया है और मेरे जो इन्वेस्टमेंट थे गोल्ड बॉन्ड में उनकी वैल्यू घट गई है, फिजिकल गोल्ड अभी सस्ता हो गया है। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कस्टम ड्यूटी घटा दिया, बट अभी एक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, उसमें जीएसटी का रेट बढ़ा दे, तो वो नेट इम्पैक्ट हो सकता है जीरो हो जाए, ठीक है? तो तब फिर से प्राइसेस गोल्ड के बढ़ जाए, राइट? तो वो भी एक मिसकंसेप्शन हो सकता है, बाकी ऐसा कोई मिसकंसेप्शन नहीं है नेशनल लेवल। So there is a rumor that because of the indexation, more black money will pour in property market. राइट। यस यस यस, तो अभी भी है, अभी भी अगर हम लोग कोई प्रॉपर्टी, सपोज मेरा ही घर एक है जिसकी वैल्यू सर्कल रेट है 50 लाख रुपीज, बट मुझे उस सर्कल रेट से ऊपर पैसे मिल रहे हैं, लेट से 55 लाख रुपीज, मैं 5 लाख कैश में लेता हूँ, ठीक है? 50 लाख को रिपोर्ट कर देता हूँ, दिस इज द नॉर्मल थिंग पीपल आर डूइंग, ठीक है? सर्कल रेट को ही शो करना या करना, तो ब्लैक मनी तो वैसे भी आ ही रहा है, ठीक है? जहां तक बात है इंडेक्सेशन हटने के बाद की, तो कई लोग
इसको अवॉइड करते थे कि नहीं, आई वांट एवरीथिंग इन वाइट, आई डोंट नीड एनी ब्लैक मनी और एनी मनी इन कैश, वो लोग भी शायद अब इंक्लाइंड हो जाएं टूवर्ड्स गेटिंग some money in cash and then reporting just the circle rate. वो भी हो सकता है. So yes, this could be true. I mean, if one of the member of the parliament, if you might know about him, C. Raghav Chadda, I think that's his surname. So Yeah. उन्होंने भी यही point रखा था, but that is a politically inclined, you know, statement. तो वो हो सकता है सच हो, जरूरी नहीं. ठीक है, तो अगर आपने वो सुन के एक बोल रहे हैं कि आर्गुमेंट है, रूमर है, तो this could be true, but not necessarily. Any more questions? Okay, so there is a question from Mr. Amit Kumar. Mhm. He is asking that I have taken few gold bonds till date. Will I be at loss at the time of maturity according to the new budget announcements? And should I further invest in it or not? Uh, So I'll first answer the questions related to your past investments. I mean, not necessarily. Like I said, if the government will increase the GST rates on gold, and their intention was to just stop the black marketing of gold, like people used to smuggle gold from outside, or there are a lot of people I know who when on their visit to Dubai or UAE, any such countries, they used to buy gold and bring them to India because the charge the rates were cheaper than India. So it could be the fact like government has reduced the custom rate just to stop that, or any kind of black marketing for that matter, and they will increase the GST rate in the future. So अगर वो नहीं होता है और फ्यूचर में भी गवर्नमेंट इस तरह के कुछ पॉलिसीज लेकर आते हैं जहाँ पे गोल्ड का रेट रिड्यूस होगा, तो हाँ, सवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में अपने को नुकसान है in our past investments. Now, whether should you invest in the future as well or not, that will depend on the future policies जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं. बट एज आई सेड अर्लियर एज वेल, मुझे लगता नहीं है कि 6% कस्टम ड्यूटी से और इसे रिड्यूस किया जाएगा, बिकॉज 9% इज सब्सटैंशियल. एंड वन ऑफ द रीजन 9% का रिडक्शन हुआ है, मेरे हिसाब से हो सकता है बिकॉज पिछले एक साल में गोल्ड के रेट्स काफी तेजी से ऊपर भागे हैं, राइट? तो हो सकता है उसे कर्व करने के लिए या उसे कंट्रोल करने के लिए कि उनकी जो मेच्योरिटी में जो उनको पेमेंट करना पड़ता बॉन्ड का, तो वो ज्यादा ना आए, हो सकता है उसके लिए भी इसे रिड्यूस किया गया हो. सो यू कैन डू इन्वेस्टमेंट्स इन द फ्यूचर, but again, we'll have to see whether the rates will increase again or not. So if it, let's say in next 6 months gold के rates reduce होते जा रहे हैं, then gold bonds नहीं, तब तो physical gold आप ले लो, ज्यादा beneficial है. Like not the ornaments but bricks or something like that. ETFs वगैरह भी better options होते हैं gold के, तो उसमें भी आप कर सकते हैं. गोल्ड बीज जो बोलते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज वो एक एसआईपी की तरह आप उसे कर सकते हो, एंड आपको जो भी रिडक्शन या इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गोल्ड होगा, उसका बेनिफिट आपको इन द लॉन्गर रन मिल जाएगा. तो दिस कुड बी वन ऑफ द स्ट्रेटेजी दैट personally I would be adopting. Right, if I have to invest say 2 lakh rupees in a year, I used to invest in SGB together. But now what I'll do is I'll invest, let's say, 50,000 every quarter. So I can do that as well, so as to take into consideration the benefit of increase and the reduction in the gold prices. So there is a query from Mr. Yashwan that what is your opinion on whether real estate property prices will increase or decrease with its indexation change in budget? My opinion, I mean, And Mr. Amit um, Kumar sir has appreciated you that it is well explained to him, thanking you. yeah, thank you so much, sir. Really appreciate it. Thank you. Um, to answer the question whether, in my opinion, whether the property rates will increase in the future, um, I mean, it will keep on increasing the way it was in the past, or जैसा होते आ रहा है अभी तक. कुछ उस पे
इंडेक्सेशन हटने से कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए. द ओनली इम्पैक्ट वुड बी अगर और हो सकता है लॉन्गर रन में उसका इम्पैक्ट दिखे अगर रेट्स को और नहीं बढ़ाया जाता या घटाया जाता एंड देन इंडेक्सेशन हटे रह सकता है तो प्राइजेस हो सकते हैं फ्यूचर में घटे ना कि बढ़े. वाई बिकॉज अगर मुझे इन्वेस्टमेंट मैं पहले करता था राइट अगर सपोज मेरे पास पैसे पड़े हैं तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ मैं शेयर मार्केट में कर सकता हूँ म्यूचुअल फंड्स वगैरह है मेरे पास कुछ बॉन्ड्स ले लिए गोल्ड ले लिया उस तरह की इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता था मैं. तो अब प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट करता था मैं हो सकता है मैं उसे कम करूं बिकॉज लॉन्ग टर्म कब कहलाएगा अगर मैं आज से 4-5 साल अगर प्रॉपर्टी को बेच रहा हूं तो भी लॉन्ग टर्म है राइट. तो वहां पे जो मुझे गेन होता वो मेरा पूरा का पूरा मुझे टैक्स देना पड़ेगा वहां पे वो इंडेक्सेशन का मुझे बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है हालांकि वो बहुत नेग्लिजिबल रहेगा 4-5 साल के ड्यूरेशन में बट वो कहीं ना कहीं मुझे इम्पैक्ट करता था. तो हो सकता है कि मैं अब डिमोटिवेट हो जाऊं कि मैं प्रॉपर्टीज में ज्यादा इन्वेस्ट ना करूं एंड सो बे इट. हो सकता है प्राइसेस उसके वजह से रिड्यूस हो जाए बट in my opinion nothing will change. It's the we we as a taxpayer are very kind hearted right. हम लोगों को टैक्स देते आ रहे हैं हर चीज में टैक्स देते हैं. आई मीन जो 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं हम लोग 2 महीने को अप्रोक्सीमेटली 2 महीने का सैलरी तो गवर्नमेंट को देते ही है. हम अपने को उतना बेनिफिट नहीं मिलता है which I believe we will get in the future because we started with the thing like the government intention is towards the developed India, Viksit Bharat. So ये कुछ hard steps हैं जो विकसित भारत की तरफ शायद लेकर जाएंगे हमें. बट अगेन इस बजट बहुत बढ़िया था इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट बट इन टर्म्स ऑफ द हिट ऑन द पॉकेट ऑफ इन्वेस्टर्स थोड़ा हार्श हो गया. तो ऑल इन ऑल अब मैं प्रॉपर्टी में तो इन्वेस्ट नहीं करने वाला फॉर श्योर. सो दैट्स माय ओपिनियन ऑन दैट. So Ms. Aisha Chakravarti has also said that she agrees with Amit and majority of us here that the session is very in-depth and impactful for most of us. You have explained it थैंक यू. in a simple and easy manner. And I completely agree with this. थैंक यू सो मच. Any एनी more अदर क्वेश्चन. queries? आई थिंक साकेत सिन्हा हैज रेज्ड हिज हैंड. Yeah, good evening, sir. Sorry, I was not able to put my query in the chat. I don't know why chat is not working for me. So, am I audible? Yes, yes, sir. Please tell me. Yeah. Uh, so, actually, I want to know that my wife is a homemaker, and Mhm. for household expenditure, I transfer some amount every month in her bank account. And Okay. after all those expenditure, whatever she saves, she puts some amount in FD or some say in share market and all those things. But it's very Mhm. nominal amount only. Means uh, hardly, I guess, less than 1 lakh profit overall. So, Okay. is there any limit on how much I can transfer to my wife's account? Will it be considered as her salary, or is she also liable for tax, paying taxes? Okay. So, first of all, Sakeji, you're doing a good job by transferring money and keeping everything, I mean, हिसाब किताब पूरा टाइट है कि हाँ इतने पैसे मिले क्या खर्च हुआ क्या बचा एंड अगेन kudos to your wife as well. She investing money in FDs and all and वहां से भी कुछ गेन हो रहा है तो on your question कि uh, कितना लिमिट है कोई लिमिट है नहीं कोई लिमिट नहीं है बिकॉज आप जो इनकम कर रहे हो आई वुड प्रिज्यूम इफ यू कैन कंफर्म दैट इज वेल आई कैन प्रिज्यूम दैट यू आर पेइंग टैक्सेस ऑन दैट राइट. Yeah, definitely. You're declaring that income and when you're transferring that to your wife that would be simply गिफ्ट ट्रांजैक्शन ही बोल सकते हैं और नॉर्मली आप ट्रांसफर भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट प्रॉब्लम कब आती है जब वो अमाउंट शुरू में तो 1 लाख 2 लाख या इट कैन गो अप टू लेट्स से 5 लाख रुपीज वहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. But when it exceeds that amount or comes around 20-25 lakh rupees FD में तो उसके इंटरेस्ट काफी सब्सटैंशियल होते हैं
राइट? हम्म, एंड देन वो 25 इवेंचुअली जब आप रिपोर्ट करोगे, हम्म, या आप रिपोर्ट नहीं करते, सपोज इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हो अपने वाइफ का, तो प्रॉब्लम हो सकती है. सो आई वुड सजेस्ट, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कितने पैसे दे सकते हो, यू कैन गिव द मनी, ठीक है, जस्ट डू इट. आई मीन ऑफ कोर्स यू आर गोइंग थ्रू द account transfers and everything, so you can always yes. substantiate that kind of a transfer. No हम्म, problem with that. The only thing we need to take into consideration is कि वो जो आप ट्रांसफर कर रहे हो या जो उससे इनकम हो रही है, वो आप हम्म, ईयर ऑन ईयर बेसिस को डिक्लेयर करते चलिए. इनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, मतलब फाइल को रेडी कीजिए. कई लोग क्या करते हैं, वाइफ पे ट्रांसफर तो करते हैं, वहां पे पैसे इन्वेस्ट भी करते हैं, इनकम भी होता है, बट वो रिपोर्ट नहीं करते थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न. ठीक है. So I would suggest to continue doing the way you're doing it, but yes, report that as well. so whatever interest or a profit she's making through her investment, do I need to declare it in my tax calculations? No, 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 no. In hers only. Okay. So both are two different means it's like she will also have the till 7 lakh in the under new regime she will not be required to pay any taxes after Right. profit of Now, more than 7 lakh only. right. So, see, the simple thing is, of course, you won't be transferring, let's say, 7 lakh together or 5 lakh together. So what examples you gave me were like, you give her some amount for the monthly expenditure, and out of that she Yeah, saves it's and then like invests. you can say means 30-40,000 per month. So it's overall it may cross 5 lakhs also in a year, complete year. And out of that, she is investing suppose 2 lakhs rupees in a year. So from that 2 lakhs, she is getting some amount as a profit in share market. So those things, is it Yeah. taxable or no? No. So yeah, that's what I said. So lakh or 2 lakh rupees is not a substantial amount, right? See, there are provisions in income tax which says that you can't divert your income, and so let's take an example. You don't get that 2 lakh extra to your wife, and you invest yourself, right? And then gain some kind of profit or gain on that. Okay. Mhm, Then what would happen? That would be taxable because you are under higher tax slab and your wife is not, mhm. Correct. right? So that would be construed as you're just avoiding the tax, right? So there are provisions in the act which prevents that. However, amount up to, let's say, 2 lakh 3 lakh rupees in a year is not a very that substantial amount, and you can always do that. But again, I would uh, request you to file the tax returns every year. Even even if you're investing, let's say, 50,000 rupees or 20,000 rupees or 2 lakh rupees in a year under her name. Okay. So that will build up the file, and eventually, even if, the amount will go up to, let's say, 25 lakh rupees after, let's say, 10 to 15 years, that won't impact you as a taxpayer, or you will not So get any kind of loss. I tried filing the income tax for her, but the option that was coming over there is like, why you want to file the income tax? Is it the taxable income more than the exempted income Others, or something? choose others. Okay, okay. Thank you very much. Yeah. Okay, sir, there is one more query from Mr. Vikas Kumar Yadav. Sir, is any impact of changing in indexation in budget? I think it's already been explained by you, but if you want to answer in a line. Mhm. The benefit of indexation. Impact of changing in indexation in budget. Okay, yeah. In a line, it will impact you if your property rate has not increased over a 10% on year-to-year basis. It will negatively impact it. Let's say you bought a property, you got that property in the year, let's say, 2005, and you want to dispose it right now. It would be a bad deal for you if your property rate has not increased over 10% on year-to-year basis. That's a compounding effect that we are talking about. Any more queries?
Ma'am, it's not a query. I just wanted to ask whether the beautiful presentation that sir has made, is it possible for us to get the same so that we can distribute it for the common knowledge for the students? Is it Sure, possible? sure. I'll share the PDF version over an email that can be shared with you guys. Thank you, sir. That will be great. Thank you so much. You can share it to